Good evening and welcome. You're watching Breaking Views with me, Sanket Upadhyay, the show where we get you all the views so that you get the complete picture. Now, the complete picture as far as Parliament is concerned is this. Day before yesterday, 4 MPs were suspended from the Lok Sabha. Their names are as follows: Manikam Tagore, Ramya Haridas, Jyotimani and T.N. Pratap. Then yesterday, 19 MPs were suspended from the Rajya Sabha. Basically, the government recommended, that's the rule, and then the chair agreed. Sushmita Dev, Mausam Noor, Shanta Chetri, Dola Sen, Shantanu Sen, Abhi Ranjan Biswar, Mohammad Nadimul Haq. These are all from the Trinamool Congress. Then Mr. M. Abdullah from the DMK, B. Lingayan Yadav from the Telangana Rashtra Samiti, A. Rahim from the CPM, Ravindra Vadiraju from the TRS, S. Kalyana Sundaram from the DMK, R. Girirajan, N.R. Ilango, V. Sivadasan, 2 from the DMK, 1 from the CPM, then Mr. Shanmugam from the DMK, Damodar Rao from the TRS, Santosh Kumar from the CPI and Kanimodi NVM Somu from the DMK. And today, as if this was not enough, 23 suspended. Sanjay Singh was also suspended for unruly behavior. While the others were demanding a discussion on price rise, Sanjay Singh apparently was basically saying that he was trying to highlight the hooch tragedy in Gujarat. And he'll be joining us in just a short moment. Sanjay Singh raised slogans about deaths in Gujarat hooch tragedy. He tore papers, threw them at the chair, and he was suspended for unruly behavior and utter disregard for the chair. And while 24 MPs stand suspended, the government has now said, so these are the 24 MPs who stand suspended, both houses included. The government has now said, let's debate price rise. The exact same thing that these MPs wanted. So they have been kicked out, they are suspended, and the agenda is price rise will be discussed next week. Where? In the Rajya Sabha. How many people in the Rajya Sabha have been suspended so far? 20. So with 20 MPs of the opposition out, what exactly will be the nature of this debate? Will this be a debate or a TED talk? That's the question that we are asking. Let us introduce our guest. S. Jyotimani, suspended Congress MP. She's been suspended for the whole session. And Mr. Kailash Soni is a member of parliament for the Rajya Sabha of the Bharatiya Janata Party. Mr. Soni, I want to begin with you first. Should this be seen as an attempt by the government to discuss price rise at a time when there is an opposition Mukt parliament? When there will be no one in opposition, then obviously there will be no debate. Mr. Kailash Soni. जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप महंगाई पर चर्चा करेंगे, अब तक जो सांसद कह रहे थे कि महंगाई पर चर्चा कीजिए, तो अब आप माने नहीं, उसके बाद फिर इन सब लोगों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड हो गए, तो अब सरकार कह रही है कि अब अगले हफ्ते से शुरू करते हैं, लेकिन 24 सांसद तो सस्पेंड हैं, तो ये ऑपोजिशन मुक्त संसद महंगाई पर चर्चा करेगी? देखिए, बेसिकली बात महंगाई से कुछ लेना देना नहीं है। सवाल है एक परिवार के भ्रष्टाचार के ऊपर और उससे जुड़े दलों की, और उनके खिलाफ ये इतनी सख्त कार्रवाई जो इंडियन हिस्ट्री में कभी किसी सरकार ने किसी दल के खिलाफ नहीं की। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। इन्हें महंगाई से कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें जन सरोकारों से कुछ लेना देना नहीं है। इनको केवल अपने एजेंडे को, अपनी प्रतिबद्धता को, उसको लेकर के हंगामा करना है। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, अरे पूरे लोकतंत्र को स्मैश कर देंगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत। पर कैलाश जी मुझे ये बताइए, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, तो बीजेपी भी संसद को ठप कर चुकी है। आप शीतकालीन सत्र भूल गए 2010 का, जब 2G को लेकर के बीजेपी ने पूरे एक सत्र को ही वॉश आउट कर दिया।
इसलिए उनको समर्थन था जनता का। ये बुनियादी बात आपको समझना पड़ेगी और दलों को समझना पड़ेगी। नहीं नहीं, तो ये कौन तय करेगा कि किसको जनता का समर्थन है या नहीं है? देखिए, देश की जनता समझ गई है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई कैलाश जी, मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं कि उस समय देश की जनता का समर्थन आपको था, अभी जो है जनता का समर्थन आप ही के पास है, इस वजह से आप एक्शन ले रहे हैं। ये तय कौन करेगा? इसका पैमाना क्या है? हु इज डिसाइडिंग दिस? वी आर कमिटेड सोसाइटी फॉर नेशन। और ये बात, इस एजेंडे को, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस एजेंडे को देश ने समझ लिया है और इसलिए वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल दल अपनी अस्मिता, अपनी मान्यता जनता के बीच में खोती जा रही। भ्रष्टाचार के खिलाफ बताइए ओके, एस ज्योतिमणि, कांग्रेस एमपी, आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन. आई बिलीव यू वर हर्ट आल्सो. We saw some pictures on social media, but Ms. Jyotimani, you see, do you also feel that the government has now decided to hold a price rise discussion in the Rajya Sabha at a time when 20 MPs from the opposition will not be there? So then who will listen to this price rise debate, and where will the debate be? See, first let me respond to spokesperson from BJP. See, what corruption, the family is known for its integrity and honesty in this country. If there is a corruption, what this Narendra Modi government has done for last 8 years, National Herald has anything to do with the government? It is Congress party's property. It is started by Nehru. It has nothing to do with government. I would like to ask him back, who is Mughal Rai? Who is Himanta Biswa Sarma? I can go on and tell the list of the people who are really corrupt and joined BJP and protected by BJP. Please, BJP spokesperson has to mind his words. And back to your point, see, this what were our two demands? We want the GST has to be withdrawn. It has been exorbitant GST, which people cannot afford to pay. Second, we want the discussion on the price rise. This is what precisely we fight in the floor of the house. But why don't government relent on the same day? Because we are saying this is an urgent matter to discussion, because people are really couldn't bear the burden. Common man is struggling. This government is helping their corporate friends, giving crores of rupees to billions of rupees has to go to his two corporate friends, Mr. Ambani and Adani. Now we are all fighting in the parliament. Now we are all suspended. There is a lot of problem is happened just because Congress party fighting in the front, just because of the Rahul ji leading from the front. But Jyotimani ji, there is also a statement that if MPs apologize, then they can come back. So do you feel that the MPs must apologize and be there for an important discussion on price rise? Why do we apologize? What crime we have done? The government has to apologize to us. The government has to apologize to the people of this country for actually putting the tax, milk, curd, pencil, hospital ICUs, what not. This government has to apologize to the people of this country. This government has to apologize to the opposition. The government has to apologize to the MPs, especially the women MPs. How they have treated us, tearing the cloth of the woman MPs' dignity. There is so much talk about dignity of the house. Woman MP we the woman MPs do not have the right to have a dignity. Reply. What are they talking about? Kailash ji, a quick reply from you. You have heard what the Congress MP says, that there is no question of apologizing. What should they apologize for? क्यों सॉरी बोले वो? देखिए, महंगाई के ऊपर यदि 4 दिन बाद चर्चा हो जाती और वित्त मंत्री जी के सामने चर्चा होती, इसमें क्या दिक्कत होती? इसमें डेमोक्रेसी कहां गुम हो जाती? 4 दिन बाद यदि चर्चा हो जाती, देश के और भी मसले हैं, कितने कानून हैं जो जनहित में, जन सरोकारों में बनाना है, उनके संबंध से यदि सबका पॉजिटिव अप्रोच होता, लेकिन कैलाश जी, अजीब सी बात लगती है, अगर वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर स्वस्थ नहीं है, तो एमओएस फाइनेंस भी हैं, सरकार है. इससे पहले क्या कभी नहीं हुआ कि सरकार के किसी और मंत्री ने किसी और विभाग के बारे में ना बोला हो या स्पीच ना दी हो?
देखिए, यदि पॉजिटिव अप्रोच जिनने पॉलिसी बनाई है, जिनने टैक्सेशन लगाया है, एक तो सारा मुद्दा इनका एक्सपोज्ड हो गया कि जो नारे इनने बैनरों पे लगा करके और आंदोलन किया, इनके सारे फाइनेंस मिनिस्टर ये जीएसटी परिषद में उपस्थित थे। सबकी कंसेंट से ये टैक्सेशन जीएसटी का हुआ है। चलिए, अब देखना, उनका ये कहना है कि उस वहां पर मेजॉरिटी वोट से अगर कोई चीज पास होगी तो कांग्रेस पार्टी के तो दो ही चीफ मिनिस्टर हैं और जो छोटे छोटे दल हैं उनके भी कम ही लोग हैं। बहरहाल इस पर विस्तार से चर्चा, डिटेल्ड डिस्कशन ऑन प्राइस राइज, ऑन जीएसटी हैज टू हैपन इन पार्लियामेंट, बट along with the opposition. Otherwise, as we said, it's going to become a TED talk instead of a debate. Thank you very much to S. Jyotimani as well as Mr. Kailash Soni. So joining us right now is Mr. Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party, suspended MP, and he is protesting, and you can see he is sitting in the lawns in Parliament. Sanjay ji, कुल 24 सांसद अब निलंबित हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो आप अभी गांधी प्रतिमा के पास बैठे हुए हैं, ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? देखिए, ये तो तय सरकार को करना है। हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसको पूरा कर रहे हैं और मैंने नियम 267 के तहत नोटिस दिया। मांग कर रहा हूं, कल से सरकार से बार बार कह रहा हूं कि भाई 55 लोगों की जान चली गई उस प्रदेश में जहां पे शराबबंदी है। गुजरात के अंदर जहरीली शराब से 55 लोगों की जान चली गई। सदन में प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को आके जवाब देना चाहिए। दोनों लोग गुजरात से हैं, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस गांव के ग्राम प्रधान ने, जहां की यह घटना है, कई बार लिखित में सूचना दी थी कि बहुत बड़ी घटना हो सकती है, आप कृपा करके इस पे कार्रवाई कीजिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई ना होने के पीछे सीधा कारण यह है कि जहरीली शराब बेचने वालों को राजनीतिक आकाओं का संरक्षण प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे, वो इस पर आंख मूंदे बैठी हुई है। आज से नहीं, वर्षों से वहां 27 वर्ष हो गए लगातार बीजेपी है। और कैसे नकली शराब बिक रही है वहां पे, कैसे जहरीली शराब बिक रही है जब वहां शराबबंदी है? तो क्या इसका सवाल पूछना, क्या इसका जवाब मांगना सरकार से गुनाह है क्या? आरोप यह है कि जिस तरीके से अमर्यादित, और मैं सरकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, अमर्यादित ढंग से कार्रवाई की गई, चेयर की तरफ पेपर फेंके गए, ये सब ठीक तरीका नहीं है प्रोटेस्ट करने का। तो ठीक तरीका क्या है मुझे बताइए। आप बताइए कि अगर मैंने 267 के तहत नोटिस दिया तो वो हमारी संसद की एक नियम के तहत ही मैंने मांग की कि इस विषय पे चर्चा हो, और आपने हमारी चर्चा को डिनाई किया। कल भी, आज भी लगातार जब मैंने बार बार इनसे सवाल किया कि भाई 55 लोगों की जान चली गई है, 55 लोगों की जान चली गई। आप देखिए, वेंकैया नायडू जी, हमारे सभापति जी जब बैठे थे उस वक्त भी मैं यही बात कह रहा हूं, जब हरिवंश जी बैठे थे उस वक्त भी मैं यही बात कह रहा हूं, जब हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब बैठे थे, कलिता जी हमारे जो वाइस चेयरमैन है वो बैठे थे, उस वक्त भी मैं यही बात कर रहा हूं। उठा के सारे वीडियो देख लीजिए। मैंने क्या कोई व्यक्तिगत मुद्दा उठाया क्या वहां पे? गुजरात की जनता, देश की जनता इसका जवाब चाहती है। 55 जान चली गई, बहुत सारे लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और आप सदन में उसके बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उठा के आपने मुझे निलंबित कर दिया। Now, Sanjay Singh, one question. निलंबित कर दिया। Sanjay Singh, a question that I want to ask you is that what happens to a price rise discussion? You see, the government has agreed that they will go ahead with a price rise discussion, but with 24 MPs out, and they have said that if you apologize, you can come back and participate in the price rise discussion. So, will you apologize? ये बड़ी अजीब बात है कि जिस सरकार ने महंगाई बढ़ाई, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार माफी नहीं मांगेगी। जिस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई, वो सरकार माफी नहीं मांगेगी। जिस सरकार ने डॉलर 80 रुपए पे पहुंचा दिया, वो सरकार माफी नहीं मांगेगी। जिस सरकार ने अग्निपथ योजना लाके नौजवानों की जिंदगी बर्बाद की, वो सरकार माफी नहीं मांगेगी। जो सरकार भारत की सेना को कमजोर कर रही है,
जिस सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए अपने चंद पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया, वो सरकार तो माफी नहीं मांगेगी। हम लोग जो इन मुद्दों पे चर्चा चाहते हैं, हम माफी मांगेंगे। संकेत जी, आपको भी अगर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ये दे दे सरकार, तो आप भी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अडानी को कैसे दिया है? अडानी के लिए पैसा है, महंगाई कम करने के लिए पैसा नहीं है, नौजवानों को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है, किसानों को फसल का दाम देने के लिए पैसा नहीं है, छोटे मोटे जो लोगों के लोन बाकी रहते हैं वो माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। तो महंगाई पे चर्चा आप कह रहे हैं कि ये सरकार तैयार है, कैसे तैयार है संकेत जी मुझे बताइए। मैंने तो खुद, और आप लोगों को भी वो नोटिस भेजा है, मैंने खुद महंगाई पर चर्चा के लिए 267 का लगातार कई दिनों तक नोटिस दिया। But Sanjay Singh, I mean, how will this happen? Do you feel that with absolutely no or very few members from the opposition, because most of you are now suspended, and the condition being that you apologize and come back, if you will not be there for a crucial price rise discussion and you will stay suspended, सरकार को, will that have a meaning? सरकार को महंगाई बढ़ाने के लिए माफी मांगनी चाहिए, सरकार को बेरोजगारी बढ़ाने के लिए माफी मांगनी चाहिए, और सरकार को माफी मांगनी चाहिए जो इन्होंने देश की दुर्दशा कर रखी है। जहां तक हम लोगों का माफी मांगने का सवाल है, तो हमने तो नियम के तहत बहस की मांग की है। गुजरात में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, उसके लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए इस देश के लोगों से, कि जिस प्रदेश में शराबबंदी है वहां पे शराब से मौतें कैसे हो गई, नकली शराब से, जहरीली शराब से, और गुजरात के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो हम तो अपनी बात, अपनी आवाज जो लेके बैठे हैं, हम क्या यहाँ सदन में सोने के लिए आते हैं? हम क्या यहाँ घूमने के लिए आते हैं? हम यहाँ महंगाई का सवाल, ऐसी बड़ी घटनाएं जैसे गुजरात में हुई नकली शराब से मौतों का सवाल, बेरोजगारी का सवाल उठाने के लिए आते हैं। और अगर इस पे आप चर्चा ही नहीं करना चाहते, सस्पेंड कर करके एक एक सांसद को निकालना चाहते हैं, तो पूरे विपक्ष को एक साथ आप सस्पेंड कर दीजिए, अपने ढंग से चलाइए लोकतंत्र को। So do you feel that a price rise discussion will have no meaning if there are opposition MPs who will remain suspended? नहीं, बहुत सारे और लोग हैं सदन में, मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पे सदन में अपनी बात रखने वाले लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं सदन में अपनी बात रखने वाले, लेकिन अच्छा होता कि सरकार इस बहस में सबको शामिल करे। संजय सिंह, मेरा आखिरी सवाल ये है, और मैं फिर से आपसे पूछता हूं, आपने बार बार इस बात का जिक्र किया है, यू मेंशन्ड द ह्यूज ट्रेजेडी इन गुजरात एंड वी सॉ द आम आदमी पार्टी लीड अ प्रोटेस्ट आल्सो, लेकिन क्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि यहां दिल्ली में बीजेपी ने और एलजी ने आपके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी ऑन लिकर एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग इन काइंड? नहीं तो महंगाई के खिलाफ इन्होंने कौन से हमारे खिलाफ मुहिम छेड़ी थी? तो हम तो महंगाई पे भी मांग कर रहे थे चर्चा की, सदन में लगातार नोटिस दे रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि नकली शराब का धंधा ये दिल्ली में करना चाहते हैं गुजरात की तरह, और इसीलिए ये दिल्ली में एक जो आबकारी नीति है जिससे नकली शराब का धंधा यहाँ पे बंद हो रहा है, जिसमें सरकार 1300 करोड़ रुपए के मुनाफे में है, आप उस पूरी योजना को ठप करना चाहते हैं, मुकदमे लिख लिख के, FIR कर करके। तो वो काम आप कीजिए, लेकिन ये बताइए कि गुजरात में 55 लोगों की जान कैसे गई, ऐसे प्रदेश में जहां पे शराबबंदी है, करोड़ों की उगाही करके कैसे लोगों की जान आप ले रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। So you are not going to, Sanjay Singh, my last question, you are not going to say sorry or apologize as the government wants? संकेत जी, आप मेरी गलती बता दीजिए, मैं अभी तुरंत माफी मांग लेता हूं। क्या इस सदन में 267 का नोटिस देके चर्चा की मांग करना, महंगाई जैसे सवाल पे, जहरीली शराब से हुई मौतों जैसे सवाल पे गुनाह है, अपराध है? अगर ये अपराध है तो मैं माफी मांग लेता हूं, अगर ये अपराध नहीं है तो सरकार माफी मांगे। All right, Sanjay Singh, many thanks for joining us. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। All right, joining us right now is yet another suspended MP, Sushmita Dev. Ms. Dev, thank you very much for speaking to NDTV. Now the government wants a discussion on price rise. But the thing is, 24 of you are suspended. And the condition is that you should apologize. So may I know what you are going to do? Sanket, the question is, what do we apologize for?
all we asked for is an immediate debate in the parliament about a burning issue that is ailing the nation, which is price rise. And you've seen there's been a lot of repercussion on the GST, the way it has been implemented. We demanded a debate, an immediate debate, which didn't happen. So what is it? Do the people of this country, I ask your viewers, do they feel that we should just sit in parliament and keep saying, yes, sir, be a yes man to the parliament and to the government? Is it not our duty to raise these issues in parliament and demand a debate? We are not going to apologize for demanding a debate on price rise and GST. Why should we? Then what happens, Sushmita Dev, to a debate on price rise? I mean, with very few MPs left inside the House and 24 of them outside, what is the meaning of a price rise debate when 24 MPs from the opposition are outside of Parliament? Do you think that this debate will have any meaning? See, first of all, the Parliament is the place to debate issues that impact the people. And who are the people who participate in it? Members of Parliament participate. Now, what we are saying is you have suspended members of Parliament till Friday, which is day after. So if you want to debate it, what we are saying inside the Parliament is that lift the suspension and let everybody participate in it. If you've agreed to debate it, then let us exercise our right of being present in the debate or taking part in the debate. Otherwise, what is the point of having a debate with half the opposition sitting outside at the Gandhi statue protesting? That's what we are saying. So I don't think that our floor leaders are going to agree to debate unless this whole problem is resolved and we can exercise our right to participate in that debate. And we have every right, because that's what people want. Can anybody deny that price rise is a burning issue today in the country? Now, Sushmita Dev, I wanted to ask you this question on the rights of an MP to protest and the manner in which the protest needs to be done. So the government feels that this is no way of protesting, that you fling papers at the chair, that you create a ruckus, don't allow business to proceed, and it is crucial public money which is being lost as no business is being done in Parliament. You see, the government needs to introspect on why it is that the members of Parliament are protesting inside the Parliament. We are moving notice after notice to debate the issue of GST and price rise, and the government is not relenting. They are just paying lip service. Yes, we'll do it when we can. There's a sense of urgency. How quickly a matter is debated in Parliament also sends a message to the public that as public representatives sitting inside the Parliament, it's not like a regular thing going on and bills are being debated. Debate bills, we have no problem. But in a single day, if there are 6 or 7 working hours, you can always allocate 1 hour a day or 2 hours a day or half an hour a day and start the debate on price rise. Now, Sushmita there's no plausible explanation. In the past, we have heard very famously the comments of late Mr. Arun Jaitley and late Ms. Sushma Swaraj, where they said that protesting in Parliament is also a form of democracy. So do you feel that these rules apply here as well? See, when you use the word democracy, what is a democracy? Democracy means government of the people, for the people, by the people. Will the people of the country forgive us if we go into Parliament as Rajya Sabha MPs and Lok Sabha's MPs and just sit around doing government business and passing bills, and we don't talk about what the nation is facing? So it's what Arun Jaitley ji said, that protesting inside Parliament is also a form of democracy. He's right. I mean, what is it that we are asking for that is unjustified? That's what the government needs to think. We even said that if Nirmala ji is not well, no problem. We hope she recovers soon. You give some other minister who will reply and take notes for her. Have we not seen in the past when the farm laws were passed, what we call the Kala Kanun, who addressed the Parliament? The defense minister.
Mr. Rajnath Singh Sushmita addressed the Dev, do you parliament. feel that the government is basically procrastinating or procrastinated a decision on this debate so that they can come a little prepared? For instance, today there have been meetings of standing committees. Today we see the government is talking about a price rise debate starting next week. You see, Sanket, what is happening inside the parliament is exactly what's happening outside the parliament. Any voice of dissent, any voice that is critical of the government, the attitude of the government is to bully. That does not work in a democracy. You have the numbers, you have the mandate of the people, you will have the opportunity to tell the people of India through the parliament that what's the reason for the price rise and what do you plan to do about it. If we start debating in the world's largest democracy, what is left in parliament? If the government is going to bulldoze us and tell us constantly what they want without giving the opposition a say, then why is the opposition even there in parliament? You run it one-sidedly. And can I please remind your viewers that the same impasse, the same deadlock, the same protests happened during the farm laws. The government did not relent. The government bulldozed it and then had to repeal it. The Prime Minister of India had to address the nation and say, I'm repealing the bill. Had they listened to the opposition, which is sometimes and often enough is constructive criticism, then the government wouldn't have faced the embarrassment of repealing the farm laws. So sometimes you've got to give other people their voice and opportunity to speak. You ask any single person on the streets, ask the common man what he's going through with price rise. Can I justify myself going to my constituency when they'll say, Madam, what were you doing in parliament? Oh, you passed the Antarctica bill and you passed the, weapons of mass destruction bill. You said nothing about price rise. Because that's the mood of the nation. And the mood of the nation must be reflected inside the house. Sure. After all, a parliament is meant for the people. Not for me to go and earn a salary there, no. It's for me to fight for the people inside the parliament. It's my right. Okay. Sushmita Dev, many thanks for joining us. Thank you so much. Thank you.